Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, this is the 19th lecture, and further I will explain you stoichiometry in chemical analysis. Lekin before I explain to you this topic, so I forgot to explain the definition of limiting reagent in my previous lecture. So I was actually telling you that whenever there is a chemical reaction, so it is quite possible that any one of the reactant is present in excess amount, okay, and other in the minimum amount, right? So ये जो excess reactants होते हैं, इन्हें हम कहते हैं leftovers, ठीक है? Whenever the reaction is complete, any reactant which is in excess is known as leftovers. So reactions quickly, immediately stops at once as soon as one of the reactant is totally consumed. And we can say that the substance that is totally consumed in the chemical reaction is called limiting reagent. Now I'm explaining you the stoichiometry in chemical analysis. Okay, so these stoichiometry calculation actually follows the quantitative analysis. Quantitative analysis means that in which we are very much concerned about the quantities of reactants and products. So all the stoichiometry, nearly all the stoichiometry calculation follows the quantitative analysis methodology, and it is often used to determine the concentration of the substance, ठीक है, which is present in the sample. अगर आपके पास sample A है, so what is present in the sample A and to what amount the sample is having different components, the analysis of this sample in the way to find out the exact concentration is actually the stoichiometry chemical analysis. So there are mainly two types of analysis, right? So number one is the gravimetric analysis, right? And it has further sub types, जैसे कि precipitation gravimetry, volatilization gravimetry, electrogravimetry. There are many other things, but we are most interested in the second type of analysis, which is known as volumetric analysis. So volumetric analysis, if you I mean carefully examine the word volumetric, so you can understand quickly that it's something related to the volume of the substance. Okay, so now our next topic, very crucial topic, which is very common in your lab experiments. So upcoming labs are based on the volumetric analysis, right? So the volumetric analysis actually involves the quantitative measurement of substances in terms of volumes. Again, I told you that if you look at the word, you can easily understand what is meant by the volumetric analysis. Volumetric analysis means quantitative measurement of a substance in terms of volume. अच्छा, अब इससे प्रिंसिपल क्या है? हमारे पास चीजें हैं known और unknown, right? अच्छा, अब आपके पास जो known volume होता है, फॉर एग्जाम्पल x हमारे पास चीज है, उसका वॉल्यूम हमें known है. It is always represented by V1, a known volume V1, a known volume V1 of the substance. और उसकी concentration भी हमें पता है कितनी है, कितना strong है वो, right? उसे कहते हैं N1. So V1, V1 and N1. ये आपको known है. So in known quantities की base पे you can go through an experiment to find the volume and the concentration of the unknown. So जो unknown होता है volume उसे हम कहते हैं V2 और जो unknown concentration होती है उसे कहते हैं N2. So V1 is equal to V1 and 1 is always equal to V2 or N2. Right?
सो इस वॉल्यूम को हम फाइंड आउट करते हैं बाय गोइंग थ्रू अ रिएक्शन विच इज कॉल्ड टाइट्रेशन। टाइट्रेशन से हम इसकी वी विल फाइंड द रीडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 10 ml आया हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 ml हमारी रीडिंग आ गई है जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया। फिर हम नॉन वैल्यूज इधर लगाएंगे, V2 की वैल्यू हम टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट से नोन कर लेंगे और देन वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन। सो दिस इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। और जो आपकी जो लैब्स में अपलोड करने लगी हूँ नाउ, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की सारी लैब्स हैं। द वॉल्यूम ऑफ V1, the volume of V1 is noted at the end point of the reaction. The concentration N2 is calculated using the following equations. So thumb इसमें लगा के the end point of such reaction is indicated by change in color. अब इसने कहा the volume V1 is noted, जबकि फॉर्मूला हम जो ले रहे हैं the unknown volume V2, तो इसको V2 कहना चाहिए था वहाँ पे, so we will correct it. So the volume V2 is noted at the end point of the reaction. So by using this formula, we then calculate the concentration of the unknown substance. अच्छा, इसमें कुछ terms भी use करते हैं हम, which are involved in volumetric analysis. Number one, titration. What is meant by titration? So titration is a process of finding out the volume of solution which is required to completely with the volume of another solution is called titration. हम इसमें titrations के अंदर किसी का volume हम find out करते हैं by using the known volumes and concentrations to calculate the unknown concentration, right? What is meant by titrate? The solution whose concentration is to be estimated. इसका मतलब है कि N1 और N2 जो है that is the titrate, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस देते हैं तो जो एसिड होता है उसकी नॉन कंसंट्रेशन होती है और बेस की आपने फाइंड आउट करनी होती है। तो टाइट्रेट इसमें कौन सी हो जाएगी? बेस, जिसकी की कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है। टाइट्रेंट कैसे होते हैं? द सोल्यूशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ इज कॉल्ड टाइट्रेंट, जिसकी आपको कंसंट्रेशन पता होगी दैट इज कॉल्ड टाइट्रेंट। सो टाइट्रेंट और टाइट्रेट को हम टाइट्रेंट को यूज करके बाय द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द टाइट्रेट। सो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर हम इसलिए डालते हैं बिकॉज इंडिकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि व्हेन वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, सो वी विल यूज द इंडिकेटर विच इज नोन एज फिनोफ्थलीन। सो फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस होती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है देयर इज अ चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर इज कॉल्ड, पिंक कलर एक आ जाता है, पिंक कलर जो आता है दैट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट, और उस पे हम अपनी रीडिंग स्टॉप कर देते हैं कि नहीं अब हमें और इसके अंदर एसिड नहीं मिक्स करना इस बेस में, बिकॉज द बेस इज completely neutralized by the acid. So ब्यूरेट जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं उधर से हम रीडिंग नोट करके वो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं और उस वॉल्यूम और नॉन कंसंट्रेशन को यूज करके देन वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द टाइट्रेट। अब आती हैं आगे स्टाइकोमेट्री प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस। ये तो मैं लूंगी आपके साथ सारी लैब्स में, और हम इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दूंगी उसमें मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगी कि किस किस्म के न्यूमेरिकल्स आपको वी कैन यूज, वी कैन गिव, और जो मिड में भी आ रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइकोमेट्री केमिकल एनालिसिस। थैंक यू सो मच।